Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you some question of Indian geography. In these questions, I will teach you how to learn these questions, and one thing more will be I will translate all the question in English so that you cannot just only translate the language, and also you can know how to speak English well. Through this process, you will get a chance to speak English language also. So dear, I have been trying my best effort on this channel to teach English language and simultaneously some several subjects also. So dear friends, let us start the first question of Indian geography, which is related with the mountain ranges. So the first question is, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, India's northern located mountain range are the mountain range located in the northern India is which? That is Himalaya. It is well known. That is Himalaya. And about Himalaya, there is given some more information. These are that संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां, most of the highest peaks of the world are located in Himalaya. विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं. There are many peaks of Himalayas amongst the world's 100 highest peak. विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है. The world's highest peak Mount Everest is the peak of the Himalaya. हिमालय में सबसे ज्यादा पर्वत शिखर हैं. There are more than hundreds mountain peak in the Himalaya, जो 7,200 मीटर से ऊंचे हैं. Those are more than 7,200 meters in height. हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा. Amongst the main Himalayas peaks, some more important are here. These are सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा हिमालय, शिवशंकर, गणेश, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरी शंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा. So in this way I will teach you. This is a very fantastic way, because I know it well that most of the parents are spending their money for their children to know English language. That's why they are sending their student in CBSE board. But students are not playing the game of learning English language in better way. So here is my target to teach everyone to become successful speaker of English language. So here it was the first question. Let us see the second question also. Let us see the second question. The second question is here. पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? Himalaya is related with which mountain range among these mountain ranges? That is related with Walit Pahad. That is the answer. Walit Parvat, folded mountain. Walit Parvat, folded mountain. That is the answer of this question. So let us start to study some more information which is given here. The first one is हिमालय एक पर्वत तंत्र है. हिमालय इज द माउंटेन रेंज जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है. विच डिवाइड्स इंडियन सब कंटिनेंट विद मिडिल एशिया एंड तिब्बत. यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों. दिस माउंटेन रेंज मेनली from three parallel ranges like महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है.
This is made of these all three mountain ranges. Those are parallel with each other. जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किमी की लंबाई में फैली है, which is stretches almost 2400 kilometers as from western to east in the form of a curve. इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है. इस चाप का उभार what we should we say something here. The word is not getting right now over here, but let me tell you. इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है. The raised part of this curve is in the southern region. It means उत्तरी भारत के मैदान की ओर towards the northern plain region, और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है. And the center is towards the plateau of तिब्बत. तीन प्रमुख श्रेणियों के अलावा इन प्लेस ऑफ दीज थ्री माउंटेन रेंजेस, चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है. द फोर्थ वन एंड द नॉर्दर्न मोस्ट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल हिमालय या ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, इन व्हिच काराकोरम कैलाश रेंज आर इंक्लूडेड. हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है. हिमालय माउंटेन रेंज इज स्ट्रेचेस इन 7 कंट्रीज. ये देश हैं. दीज कंट्रीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन एंड म्यांमार. So in this way we will learn and we will speak English language, because this is the most simplest way of learning English, and I know it well. If in your mind something is in English, then you can translate those all things very well. So that is the process of learning English language. In the early stage, translate it, but after some time you automatically translate without pressurizing your mind. You can easily translate it. So let us study the next question. The next question is, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? Which is the highest mountain peak in India? That is none other than गार्डविन आस्टेन. That is none other than गार्डविन आस्टेन. संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित हैं. The most mountain ranges of the world is located in Himalayas. विश्व के 100 सर्वोच्च शिखर हिमालय की ओर अनेक चोटियां हैं. विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में amongst the 100 highest peaks are in Himalaya. Most of them are in Himalayas. विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, the highest Mount Everest the highest peak Mount Everest is located in Himalayas of the world. That is also a peak of Himalaya. हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं. There are more than 100 mountain ranges in the Himalaya, in mountain peaks in the Himalaya, जो 7,200 मीटर से ऊंचे हैं. Those are more than 7,200 meters in height. हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागर माथा हिमालय. हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में among some main mountains peak of the Himalaya, the most important are
Sagar Matha Himalaya, as I told you in earlier question, Annapurna was there, Shiv Shankar, Gade, Rangatang, Mansalu, Rulwaling, Zugul, Gauri Shankar, Kumbu, Dholagiri or Kanchenjunga. These all are included amongst them, which are almost the part of those hundreds mountain peaks of India in Himalayas. Sorry, mountain peaks of Himalayas. Okay. The next question is, भारत में हिमालय सर्वोच्च पर्वत छोटी, the highest mountain range of mountain peak of Himalaya in India, that is Kanchenjunga. That is Kanchenjunga. Okay. The answer is Godwin Austen Mount K2 or K2 mountain हिमालय का नहीं है, that is not of Himalaya. In place of that, it is the part of POK. कश्मीर के काराकोरम पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, that is the highest peak of Kashmir's Karakoram mountain range. The highest peak of Karakoram mountain range, that is in POK. जो उत्तरी कश्मीर में 35, that is not in right way, that is written the location. Okay. Which उत्तरी कश्मीर में, which in northern Kashmir 35 degree to 53 degree northern and 26 degree and 31 centimeter in what is written this is in eastern पर है. यह चीन के तख्त कोरगन ताजिक, यह चीन के तख्त कोरगन, दिस इज इन द चाइनाज तख्त कोरगन ताजिक जिंगजियांग और पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है. इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ चाइनाज तख्त कोरगन ताजिक जिंगजियांग एंड पाकिस्तान's गिलगिट बाल्टिस्तान लिमिट. यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो which is 8,611 meter in height, which is 8,611 meter in height. So next question is there. Let's study the next question. भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? This is the most important question. The oldest is Aravalli and the newest is Himalaya. The newest is Himalaya and the oldest is Aravalli. Aravalli, do you know, that is stretches are spreaded in where? That is in Rajasthan. And this is Himalaya, and this Himalaya is the newest mountain range of India. And about this something is written. कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. कंचनजंगा is the third largest peak of the world. यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल सीमा पर है. This is at the Nepal's boundary in the northwest डायरेक्शन ऑफ सिक्किम. कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है. कंचनजंगा नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम Tibetan
language mainly by 4 words, जिन्हें आप तौर पर those are generally called कांग छेन दंगो गा या यांग छेन दंजोंगा लिखा जाता है, रिटन इन दिस फॉर्म। सिक्किम, इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियां लगाया जाता है। इन सिक्किम इट इज मीन्ट हाई ह्यूज व्हाट शुड से हिम सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियां लगाया जाता है। इन सिक्किम its meaning is the 5 jewels of Hughes him. What is the meaning of him? What is the meaning of him? I'm not getting right now, but let me tell you. Him is, we can say that the solid form of what should say, that must be tell you solid form of ice, so that is called huge solid form of ice। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कुंभकर्ण लंगूर इन नेपाल। So this was the 5 question, and we are studying in the same way in which way I have promised you to teach, because this bilingual way will make you not only getting the knowledge of geography, but it will be helpful for you to know how to speak English language well. I am giving you content, I am giving you words, I am giving you some better expressive idea and some better pronunciation level, so you can utilize this process in speaking English language। So dear, let me tell you the next question। निम्नलिखित में से कौन भारत सर्वोच्च पर्वत शिखर है? Which of the following is the highest mountain peak of India? That is कंचनजंगा। That is कंचनजंगा। संसार के अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित हैं। Most of the highest mountain peaks is located in Himalaya। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। World's 100 highest peaks, in them the Himalayas peaks are many। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। The highest peak of the world, Mount Everest, is also a peak of the Himalaya। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं। There are more than 100 mountain ranges in Himalaya। I think this is repeated, so let's leave it and we should go for the next question। The next question is, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? Which of the following Himalayas mountain peak is located in Assam state? That is नामचा बरवा। It is नामचा बरवा। असम हिमालय के उस भाग का पारंपरिक नाम है। असम हिमालय is the name of that Himalayas traditional name, the traditional name of that Himalaya, which पश्चिमी भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर, which is stretches from western in Bhutan पूर्व में तांगसू नदी के बड़े मोड़ तक स्थित है। Spreaded in the big turn of Sangpo river
हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नामचा बरवा है। नामचा बरवा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज दिस पार्ट। अन्य उल्लेखनीय पर्वत ग्याला पेरी, कंगतो पर्वत और न्यांसी कंगसंग है। अन्य अदर रिमार्केबल माउंटेन रेंज ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत एंड न्योरी कंसंग है। These are. The next question is, we have solved 7 questions. Next 3 question we will read. The हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय is emerged through which geo mechanism? We can say sannati mechanism. Which geo mechanism? That is Tethys. That is Tethys. Okay, let me tell you. तेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लरेंसिया के मध्य से एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है। टेथिस सी इज गोंडवाना लैंड और लरेंसिया के मध्य was located in the middle as a sea, which was imagined as a sea between the Gondwana lands and Laurentia. It was imagined जो एक छिछला और सकरा सागर था, which was a shallow and narrow sea, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप and due to through the process of plate tectonics in these areas, cumulated जमा हुए अवसादों की मीनिंग नहीं आ रही है, जमा हुए accumulated, what should say the meaning of अवसाद, what that is perhaps Malwa. Okay, read it yourself, try to find out the meaning of अवसाद कि पर्वत विवर्तनिकी के परिणामस्वरूप ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स अफ्रीकी एंड इंडियन प्लेट्स collided with Eurasian plates, and due to that Himalaya and Alps-like mountain was emerged in their place. So we can say that this is the process through which Himalaya was emerged. Next question is, हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल रीजन्स ऑफ हिमालय निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दैट इज शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश फुटप्रिंट्स रीजन इज नोन एज शिवालिक। तो लेट अस स्टडी अबाउट शिवालिक श्रेणी या बाय हिमालय ही कहा जाता है। इट इज शिवालिक श्रेणी रेंज आर एक्सटर्नल हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। यह इट इज द सदर्न मोस्ट एंड जियोग्राफिकली न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला, विच इज स्ट्रेचेस आर स्प्रेडेड फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम, दिस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस एंड भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से अकॉर्डिंग टू जियोसिंक्रोसिस
process, geosynchrosis process, geosynchrosis process. It is the Kanishtam Parvamala. It is the smallest, lowest mountain range in the Himalayan range. इसकी औसत ऊंचाई, its average height is 850 meter to 1200 meters. इसकी कई श्रेणियां हैं. There are many sub ranges of this. यह 1600 किमी तक पूर्व में तीस्ता नदी. इसी stretches are spread from almost 1600 kilometer to from this in the east up to the तीस्ता रिवर. सिक्किम से पश्चिमवर्त नेपाल, फ्रॉम सिक्किम टू वेस्टर्न नेपाल एंड उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाते हैं. इट गोज टू नॉर्दर्न पाकिस्तान फ्रॉम उत्तराखंड टू कश्मीर. Through the Kashmir, from Uttarakhand through the Kashmir, it goes to northern Pakistan. Okay, there must be any mistake, but I'm not telling you that I'm perfect in this, but I'm giving you direction so that you can help yourself how to translate these all things and how to become glorious in your life by knowing English language, because it is very important language. You want to do something big in your life, then you should know English language. So if you are the student of UP board and want to convert your medium from Hindi to English, then you can do that. If you are from Bihar board, you can do that and you can become a great competitor of civil examination through this process. So the next question is the last one. This question is last one's question is Nanda Devi स्थित है. Nanda Devi is located where? That is located in Uttarakhand. That is located in Uttarakhand. So Nanda Devi पर्वत भारत की दूसरी एवं इसकी 23वीं सर्वोच्च चोटी है. Nanda Devi mountain peak is the second range of India, second peak of India, and 23rd highest peak of second highest peak of India and 23rd highest peak of the world. इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है. Kanchenjunga is the highest mountain peak in comparison of this. नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है. नंदा देवी शिखर, नंदा देवी पीक हिमालय पर्वत श्रृंखला में इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, भारत के उत्तरांचल राज्य में इन द उत्तरांचल स्टेट ऑफ इंडिया, पूर्व में गौरी गंगा, इन द ईस्टर्न गौरी गंगा, पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच है. इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ ईस्टर्न गौरी गंगा and in western Rishi Ganga. So in this way we have studied 20 questions. I have spent a lot of time to cover these 10 questions because I was translating the words. My purpose is teaching both things. You should know geography and you should know how to speak English well. So this is the process of teaching and this is a new process. So please connect with me and join my channel and do and share comments and subscribe my channel. Thank you very much.